Hello everyone, welcome to Career Launcher and we are back. And this is the session for IPMAT 2026 and this is the session of Quant. And here we are going to solve previous year questions of IPMAT 2021. Okay, so let's start. So basically what kind of questions we have got in the previous years and what can be expected this year. So now let's see what are these kind of questions. The start with the first one. So in 2021, what were the questions that were asked? So first of all, I'm going to talk about this question. There are two taps. There is one tap T1, another tap T2 at the bottom of water tank, and either both of which may open to empty the water tank. Okay, each at a constant rate. Okay, so basically to visualize better, so I have one tank and there are two pipes at the bottom. Okay, if T1 is opened, so let's call it T1, let's call it T2. If T1 is opened and T2 is closed, the water tank initially full, okay, becomes empty in half an hour. Okay, so if T1 is working alone, that can empty the whole tank in 30 minutes, and that's what it is saying. Now, if I look for another one, that if T1 and T2 both are open, then tank can be emptied in 20 minutes. Okay, so I'm talking about T1 plus T2 both. So if I say T1 is working alone, T1 is going to take 30 minutes. If T1 and T2 both are working, they can finish the job in 20 minutes. So basically, this has become a standard question of time and work. So what we are going to do? So whenever we have these kind of questions, what is the approach? How do we start? So basically, I am going to assume total work or total capacity of the tank, that is LCM of 30 and 20. So let's assume it is 60. Okay. So I'm talking about a tank had a total of 60 units of water and T1 can empty 60 units in 30 minutes. So in 1 minute, how much T1 will do? So T1 is going to empty 2 units every minute. This is what we know. Now, if I say T1 and T2 both can empty 60 units in 20 minutes, so T1 and T2 both together can empty 3 units, right? So T1 alone can empty 2 units, T1 and T2 together can empty 3 units. So T2 alone can empty how many units? 1 unit per minute. So if I want to empty the whole tank by using only T2, so how much time it should take? So it is going to take a total time of 60 minutes. So basically answer of this question is going to be 60 and this is a short answer type question. So I hope everyone is clear, yes or no. Everyone understood what was the approach of this question? Yes, no. I'm waiting for your response. Clear? Standard question of time and work. So whenever you see a question of time and work and times are given, always assume this is the total work. And that's from where you start solving the question. Make sense? Okay. So now let's start with the next one. Okay. A class consists of 30 students. Okay. Each student has registered for 5 courses. Okay. Each course instructor conducts an exam of 200 marks. Okay. The average percentage of all 30 students across all courses they have registered is 80. Okay. 2 of them apply for re-evaluation of the course. If none of their marks reduce, the average of 30 students across all courses become 80.02%, the maximum possible increase in the marks of either of the 2 students.
Okay. Can someone tell me how we should start this question? Is it easy? Is it difficult? Is it lengthy? So, what is your first thought about this question? Any guesses? Any idea? So, अप्रोच क्या होगी, शुरू कहाँ से करेंगे, सोचना कहाँ से शुरू करना है, क्या ये क्वेश्चन लेंदी है? लिखा तो बहुत सारा है, तो क्या ये क्वेश्चन लेंदी है? दिस इज इजी. ओके, वेरी नाइस दमन. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोच? सोचेंगे कैसे? इजी तो है, बट डू यू थिंक इज इट लेंदी? ये क्वेश्चन, इफ यू आर गोइंग विद द वैल्यू ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. मैं 200 काउंट ही नहीं कर रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूं पेपर है 100 नंबर का. ठीक है, पेपर कितने नंबर का? 100 नंबर का. एंड में जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा काम है 100 को 200 बनाना. ठीक है. So basically we are going to start solving this question by using 100. In the end we will multiply by 2, क्योंकि एक्चुअल मार्क्स 100 नहीं है, 200 है. ठीक. अब एक लड़के के ए मार्क्स बढ़े, दूसरे लड़के के बी मार्क्स बढ़े, दोनों के मिला के कुछ मार्क्स बढ़े, लेट्स से सी मार्क्स बढ़े. ठीक है. अब मैं ये कह रहा हूं कि भैया किसी एक बंदे के ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, किसी के कम नहीं हुए. तो क्या मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि ए के मार्क्स ही नहीं बढ़े, केवल बी के मार्क्स बढ़े? हाँ या ना? तो अगर मैं अज्यूम करूंगा तो सीधे सीधे एक ही लड़के में मैक्सिमम इंक्रीमेंट आएगा या नहीं आएगा? दैट्स व्हाट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट. मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स मार्क्स. मतलब मार्क्स एक ही का बढ़ा है, मैं एक ही का बढ़ा रहा हूँ, दो का नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि अगर जो टोटल इंक्रीमेंट है वो मैं दो लोगों में डिवाइड करूंगा तो मुझे किसी एक का मैक्सिमम इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा. तो एक के 0 मार्क्स बढ़े, जो इंक्रीमेंट आया वो दूसरे में आया. ठीक है. अब देखो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट क्या है कि अगर मैं बोलूं आई एम रेजिंग एवरीथिंग, अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 100 मार्क्स. ठीक है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट? टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स आर 30 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 5 टेस्ट दे रहा है. सो 30 स्टूडेंट्स टोटल कितना वो दे रहे होंगे? 150 टेस्ट दे रहे हैं. इन 150 टेस्ट का जो एवरेज स्कोर आया है वो आया है 80. आगे दो लोगों के मार्क्स बढ़ गए तो 150 लोगों टेस्ट का एवरेज स्कोर हो गया 80.02. एवरेज में कितने का इंक्रीज आया? 0.02. तो टोटल में कितने का इंक्रीमेंट आया? तो टोटल इंक्रीमेंट जो होगा वो एवरेज इनटू नंबर ऑफ पीपल, दैट कम्स आउट टू बी 150 इंटू 0.2. तो यहां से तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का आ गया? ओवरऑल इंक्रीमेंट आ गया अपना कितने का? 3 का. लेकिन 3 कब आया? जब हमने वैल्यू 100 अज्यूम करी थी. लेकिन अगर हम 200 के इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने आएगा? दैट इज 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 6. सो इसका मतलब टोटल मार्क्स में जो इंक्रीमेंट हुआ है, दो लोगों के टोटल मार्क्स को मिला के जो इंक्रीमेंट हुआ है दैट इज 6. राइट. अब दो लोगों का मार्क्स 6 से बढ़ा है, अब मुझे एक का मैक्सिमाइज करना है तो एक का तो 6 ही बढ़ा होगा. तो आंसर सीधे सीधे यहाँ पे आ गया अपना 6. Maximum possible increase in the marks. Understood? Without making a lot of equations, without getting into a lot of nitty-gritties, we can directly solve this question by using average. Understood? Now let's move on to the next question. ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है. अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड तरीका है जो लोगों को पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है. अगर आपको नहीं पता है तो क्या हम एग्जाम में इस टाइप को कर सकते हैं? बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड पजल. राइट. ये बहुत स्टैंडर्ड पजल है और बहुत लोगों ने ये पजल सुनी नहीं है. तो इस टाइप की जो पजल है इसको अपन क्रैक कैसे करते हैं? तो अपने पास एक वेइंग स्केल है. ठीक है. यहाँ पे कुछ ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे रखा हुआ है. हम दोनों साइड वेट नहीं रख सकते, एक साइड हमें कॉइन रखना है और एक साइड हमें
वेट रखना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं वेट रख रहे हैं, यहाँ पे हमें कॉइन रखना है। अब हमें ये पता करना है कि कितने कितने हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेट्स चाहिए कि हम 1 से लेके 100 तक सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अगर सोना 1 ही ग्राम का है तो उसको मेजर करने के लिए तुम्हें 1 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए। अगर सोना 2 ग्राम का है तो उसको मेजर करने के लिए भी तुम्हें 2 ग्राम का एक वेट चाहिए ही चाहिए, हाँ है ना। अगर सोना 3 ग्राम का है तो क्या आप केवल 1 और 2 को यूज करके आप बना सकते हैं? नमन, ये बात तो सही है कि इसको डिफिकल्ट तो बोल ही सकते हैं। सो हम 1 और 2 को यूज करके हम 3 ग्राम मेजर कर सकते हैं। अगर 4 ग्राम है तो क्या करेंगे? तो 4 ग्राम है तो हमें 4 ग्राम का एक वेट तो चाहिए। अगर 5 ग्राम है तो हम कैसे बना सकते हैं? 4 + 1, एक 4 वाला हमने वो वेट यूज कर लिया, एक 1 वाला यूज कर लिया, तो 4 + 1 से 5 मेजर हो गया। अगर 6 वाला है तो हम 4 + 2 से मेजर कर सकते हैं, 4 वाला उठा लिया, 2 वाला कर लिया। अगर 7 है तो क्या है? 4 + 2 + 1 से हम 7 मेजर कर सकते हैं, सब उठा लिया। अभी तक तुम्हारे पास जो वेट है, 1 ग्राम का एक वेट है, 2 ग्राम का एक वेट है और 4 ग्राम का एक वेट है। तो इससे तुम 7 के अलावा कुछ 7 से ऊपर तुम नाप ही नहीं सकते। अगर 8 ग्राम मेजर करना है तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें 8 ग्राम का भी एक वेट चाहिए। तो बेसिकली हमको वो सारे वेट्स चाहिए जो 2 की पावर में चल रहे हैं। तो अगली बार अगर 8, 2, 10, 5, 15, 15 तक हम मेजर कर सकते हैं, उसके बाद अगला हमें कौन सा चाहिए रहेगा? 16, 16 के बाद अगला हमें कौन सा चाहिए रहेगा? 32, 32 के बाद हमें कौन सा चाहिए रहेगा? 64। अगर मेरे पास ये सारे वेट्स हैं तो क्या मैं सारा का सारा मेजर कर सकता हूँ, हाँ है ना। So basically, what is the minimum number of weights that are required? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So answer of this question comes out to be 7. We need overall 7 different weights that goes in the power of 2. अगर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होती, केवल लेफ्ट पेन में रखना है, तो अगर हम वेट को लेफ्ट पेन और राइट पेन में भी रख सकते हैं, तो हम हम 3 की पावर में जाते हैं। ऐसे चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये सारी वैल्यूज जो हैं ये सारी की सारी 0 के बराबर हैं। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a + b + c की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट लॉग का जो है वो है log b बेस a इज इक्वल टू c। तो यहां से तो ये कंक्लूड होता है कि जो c होगा वो a पावर b के बराबर, सॉरी, जो b होगा वो a पावर c के बराबर। दिस नंबर इज इक्वल टू दिस पावर दिस। यही कंसेप्ट हमें पूरे में यूज करना है। log base 2, log base 3, log base 4 a and that's equal to 0। अब दिस पावर दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहां से हम निकाल सकते हैं log base 3, log base 4 a and that is equal to 2 power 0 and that's equal to 1। ठीक है, log base 4 a is equal to what? 3 power 1, that is 3। a is equal to 4 power 3, that is going to be what? That is going to be 4 power 3, 4 power 3 is 64। सेम चीज हमें यहां यूज करनी है। लॉग बेस, मैं डायरेक्टली ये वाला पार्ट ले रहा हूं क्योंकि 3 पावर 0 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 1। सो log base 4, log base 5 is going to give you and that is b and that is equal to 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा? अच्छा, यहाँ 5 नहीं है, 2 है, सॉरी। log base 2 b is equal to 4 power 1, that is 4। So b comes out to be 2 power 4, that is 16। तो b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली 4 power 0 is 1, तो मैं डायरेक्टली यहीं से शुरू करूंगा। That is going to be log base 2, log base 3 c and that's equal to 1। So basically log base 3c comes out to be 2 power 1, that is 2। So c comes out to be 3 power 2, that's 9। सो अपने पास ए की वैल्यू आ गई 64, बी की वैल्यू आ गई कितनी? 16। 64 + 16 कम्स आउट टू बी व्हाट? 80। सी की वैल्यू आ गई 9, दैट कम्स आउट टू बी 89, दैट इज ऑप्शन सी।
Oh, Naman, very nice, very nice. So you are in Indore now? No. Oh, so what happened? So which college you are in? Oh, nice, nice. And why not IPM? So, okay. Now let's see about this question. So basically, if I talk about unit digit, the tens place and hundredth place never makes a difference. So these two numbers are useless. Okay. Now, oh, you did get Indore. You want to go to Indore? Oh, nice. This year you will get. Don't worry about it. So whenever you need to calculate unit digit. What you are supposed to do, and very quickly, divide a power by 4. So 85 divided by 4 and get remainder. What is the remainder? 1. And after that, go for base power remainder. So what is base here? Base is 3. 3 power 1 is 3. Okay. 5 power anything will give you 5. Now 7. If I divide 96 by 4, what is the remainder? Remainder is 0. If remainder is 0, then base power 4. This is how you calculate unit digit. So 7 power 4 comes out to be 2401. So unit digit comes out to be what? Now what you are going to get? 3 plus 1, unit digit is 4 minus 5. Now you need to understand this number is greater than this number. So actually you are doing this and this, and people might think that unit digit can be minus 1. Okay, that's not possible. So let's say 14 minus 5. What is a unit digit? 9. So unit digit of 4 minus unit digit of 5 will give you 9. So answer comes out to be 9. So that is the approach. So Naman, let's do one thing. Let's try to solve the questions very quickly, and let's see how it goes. Now, highest possible value of ratio of 4-digit number to sum of the 4 digits. Okay. So let's say there is a 4-digit number. I am if I want to go with this, I am going to look at the option highest possible value is 1000. So let's say the number itself is 1000 and sum of digits is 1 plus 0 plus 0 plus 0. So what is the ratio of 4-digit number to sum of digits? So answer comes out to be this. Or if I talk about 4-digit number is ABCD, so I am looking for ABCD upon A plus B plus C plus D. I want to minimize A plus B plus C plus D because I am looking for the minimum. Highest ratio means minimum denominator. So you you can directly put 2 equal to B equal to 0, C equal to 0, D equal to 0, and you will get that. So this is how I would approach this question in the exam. Now let's look at this one. There is a 5-digit number consisting of distinct digits. Okay. What are the odd digits we got? We got 1, 3, 5, 7, and 9. At odd place, you need only odd digit, but at even place, you can have odd digit as well as even digit because it is not mentioning anything about even places. Okay. Total, we have 10 digits from 0 to 9. Okay. So out of these 5 digits, I am going to place 1 digit over here,
So now one digit is here. So basically, let's say I'm using 1 over here. So at this place, the possibilities are 4. Now at this place, possibilities are 3. Total digits are 10. Out of 10, you have placed 1 here, you have placed 1 here, you have placed 1 here. So 3 are used. So how many are remaining? 7. So out of the 7 digit, any digit can go here and any digit can go here. So what is the answer we are looking for? That is simply this. That is going to be 5. 4s are 20. 23s are 60. 67s are, sorry, 60, 60, 360. 360 into 7 is going to be 360 into 7 is going to be what? Somewhere around 2300, 2400, something like this. So answer of this question is going to be option C. Don't need to calculate everything, don't need to solve everything. You will get the answer directly. Now, let's start this one. What is the total numbers we are talking about? The total lines, what are the total number of points we got? 10 points. Out of 10 points, how many points are collinear? 5. So to make a line, how many points do we need? 2 points. So if I want to make total number of lines from 10 points, how many lines I can make? 10C2. So effectively, I should be able to make 10C2 lines. Now what is 10C2? That is going to be 10 into 9 divided by 2. So it comes out to be 45. So on an average, how many lines I should be able to make from 10 points? That is 45. From these 5 points, how many lines I am supposed to make? That is 5C2. So 5C2 comes out to be 5 into 4 divided by 2, and that comes out to be 10. Okay. Now, these many lines should have been made, but because these 5 points are collinear, these 10 lines are actually not being formed. So how many lines are being formed? Yes. So from these 5 points, all the lines that were being formed, I have removed all those. But the problem is, one line is still being formed because these 5 points are collinear. So it is going to be plus 1. So answer of this question comes out to be option D. That is going to be 36. Okay. Now the next one. There are 9 parallel lines on the plane. Okay. If we are talking about, I'm sorry, there are 5 parallel lines on the plane. So I got 1 line, 2 line, 3 line, 4 line, and 5 line. So I got 5 lines. And I got n lines that are perpendicular. So 1 line, 2 line, 3 line, and so on. If I want to create a rectangle, I am going to pick 2 points out of these 5 points and 2 points from these n points, right? So basically from 5 points, how many ways I can select 2 points? That is going to be 5C2. From n points, how many points I need? That is going to be NC2. And these many rectangles are possible, right? And total number of rectangles that are possible are 360. I know 5C2 is 10. We have already calculated that just now. NC2 can be said as n into n minus 1 divided by 2. And that is equal to 360. Now, n into n minus 1 is equal to 72. Now, you might say that I am going to make it a quadratic equation and solve. No, just look at these two numbers. So basically, these two numbers are consecutive numbers, the two numbers that have a difference of 1. So can I break 72 in two numbers that have a difference of 2? Sorry, that has a difference of 1. Yes, 9 into 8. So it means n will be 9 and n minus 1 is going to be 8. So what is the value of n? I would say n is equal to 9. So answer of this question is going to be 9. So this is how we can calculate.
Okay. Now, if anyone has any doubt, want to ask something, kindly do let me know. All clear? So with this, let me conclude this session. Thank you.